Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Food Gossips. In this video, I'm going to share a super easy and delicious recipe of dynamite chicken. This chicken is the perfect appetizer to start your meal. Soft and tender chicken coated in dynamite sauce makes this recipe very appetizing. So let's just start making it, but before that, I would request you guys to subscribe to my channel Food Gossips. So to make this delightful chicken, we will take chicken breast pieces और उनको हम क्यूब्स के अंदर इस तरह से कट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस नाउ वी विल टेक अ बाउल और उसके अंदर हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे चिकन की मैरिनेशन के लिए हम लेंगे सॉल्ट यू कैन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मैंने क्वार्टर टी स्पून ऐड किया चिकन पाउडर क्वार्टर टी स्पून 1 egg white and 3 teaspoon of corn flour दैट्स इट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नाउ वी विल टेक अ पैन और उसके अंदर ऑलमोस्ट 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे It will almost take 5 to 6 minutes. जैसे ही हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड दैट्स इट चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट के अंदर निकाल लेंगे नाउ वी विल प्रिपेयर आवर डायनामाइट सॉस उसके लिए हम 5 टेबलस्पून ऑफ मायोनीज लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ केचप हाफ टी स्पून ऑफ पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून ऑफ जिंजर पाउडर 1 teaspoon of mustard paste 1 teaspoon of honey एंड दैट्स इट इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे डायनामाइट सॉस हमारी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है अब जो चिकन हमने प्रिपेयर किया था उसको हम डायनामाइट सॉस के अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे and that's it there you go delicious dynamite chicken is completely ready so you see how simple and super easy this recipe was I hope आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी thank you for watching it till next time assalamu alaikum